So in today's video, I'm going to recreate this look, and this look is from Malvika Satlani. I am following her routine. So yeah, let's just see what she does. And I really love Malvika Satlani as a person, as a YouTuber. I really love to watch her content. And hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. In case you're new here, then I make videos on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. And if you're seeing this place for the very first time, then please take a moment and subscribe to my channel and hit the notification bell on so that you never miss my video. So in today's video, I'm going to recreate this look, and this look is from Malvika Satlani. I am following her routine, her makeup routine. So yeah, let's just see what she does. And I really love Malvika Satlani as a person, as a YouTuber. I really love to watch her content. And Malvika Satlani doesn't, carry bold makeup. She always does like very subtle makeup, no makeup look, office makeup look. उनके channel पे भी आपको यही videos मिलेंगी बस. And I really love the way she carry it. But हाँ, काफ़ी ज़्यादा similar हो जाती है उनकी videos. But yeah, I thought why not to try it, and this is how it turned out. And I'm quite liking it. बट शुरू में तो एकदम बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया था. तो अगर आपको देखना है क्या हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी आपको ये वीडियो. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, या फिर जिसे फटाफट मेकअप करना होता है, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, बिकॉज वी वुमेन डोंट हैव टाइम, सो एज क्विक एज पॉसिबल. सो इन दिस लुक यू नीड लाइक 6 to 7 मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे बस. इसमें ज़्यादा लग सकता है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक साइड बाय साइड, और मैं मालविका सतलानी की वीडियो भी देख रही हूँ साइड बाय साइड में. बट अगर आप इसे खुद ट्राई करोगे तो आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, एंड प्रोडक्ट्स भी इतने कम चाहिए आपको. सो इट्स अप. सो इफ़ यू वांट नो लाइक हाउ आई डिड दिस मेकअप लुक, और अ ट्यूटोरियल ऑफ नो मेकअप लुक, और अ कॉलेज मेकअप लुक, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई एम विल हेल्प यू इन सम वे. विदाउट मूविंग अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन, एंड प्रेस द लाइक बटन, एंड कॉमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लुक कैसा लगा, इफ़ यू आर ऑल्सो अ फैन ऑफ मालविका सतलानी. So yeah, do let me know. Without any further ado, let's get into the. First, I see my blemishes, right? So this is your favorite concealer. So guys, first step is using a concealer. So she has used LA Girl Pro Concealer. So guys, it's not necessary कि मैं वही products यूज़ करूँगी जो मालविका सतलानी ने यूज़ करे हैं. हो सकता है कुछ products जो है मेरे अलग हों. And जो ये वीडियो है, it's not about like brands or product. It's about a routine. तो जो वो routine follow करती है, I am going to do that. So first step is concealing our dark circles and all the dark spots. So yeah, let's just do it. So we have to like apply the concealer, or let me just tell you the shade. I am in the shade medium beige, and I am just applying under my eyes, at my scars, because I think मालविका सतलानी ने ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करा है, तो मेरे को कंसीलर ही यूज़ करना पड़ेगा अपने स्कार्स के लिए. So I'll be concealing my face. So now she has like this kind of brush, fluffy brush. This is called as buffing brush. उसने मालविका सतलानी ने छोटा ब्रश लिया है, जो इससे छोटा भी आता है, and ये वाला उसका bigger version है, you can see. And this is from PAC. So I'm just going to blend everything. So I usually do the blending part with my beauty blender, as you guys must know अगर आपने मेरे makeup tutorials देखे हैं तो. So this is kind of a new thing too. ब्रश तो कवरेज ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ब्लेंडर. So you are just pushing the product into your skin. So guys, like इतने ही स्टेप, एंड उसके बाद शी जस्ट सेट हर बेस विथ लूज पाउडर. बट मेरे को थोड़ा डार्क लग रहा है, क्योंकि जो ये वाला जो कंसीलर था, आई थिंक ये थोड़ा डार्क है मेरी शेड से, लाइक 1 to 2 शेड्स. मेरा फेस थोड़ा टैन लग रहा है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर. तो दिस इज लाइक Maybelline Age Define कंसीलर, एंड दिस इज इन द शेड 130 मीडियम. सो ये थोड़ा लाइटर है, तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी. नॉट यूजिंग दिस फॉर कवरेज और एनीथिंग, इट्स जस्ट अपना फेस थोड़ा डार्क लग रहा है, तो इसलिए. So guys, this is how it's looking. मुझे अभी भी ये थोड़ा डार्क लग रहा है. I don't know for what reason. Now let's move on to another step. I am already so disappointed.
So next she has used a loose powder to set her face. So I'll be using this Maybelline Fit Me powder. So this is a natural makeup look, so you can use a compact. It's not necessary that you have to use a loose powder. My fluffy brush, I'm just tapping under my eyes. So I have set everything with the compact of Maybelline Fit Me, but मुझे अभी भी ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है. I don't know why. So yeah, let's just move on to next step. She has filled her eyebrows, so I'll do the same, and I'm using this pencil to do that. I don't remember the brand name of this pencil. Maybe this is from Nykaa. This is waterproof eyebrow pencil. Shade name is black. So this is how it is looking after doing my brows, and brows से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है फेस में. Step is using a mascara. So I'm using this Maybelline Hyper Curl mascara. So you can see कि instantly मेरी eyes में एकदम open up सी लग रही हैं. So मेरे लिड पे थोड़ा सा लग गया है वो. आप जब अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि मस्कारा आपके लिड पे या कहीं और लग जाता है, so don't just rush off and फटाफट हटाने लग जाओ उसे. थोड़ा टाइम दो उसे सूखने दो अच्छे से. एक बार जब वो ड्राई हो जाएगा तो आपके दोनों को अपना भी आराम से छूट जाएगा. So yeah, mascara is now done. Kajal. So she hasn't used any kajal in her video, in her makeup look, but I'm going to do that, and I'm going to use this Nykaa Black Magic Kajal. And मैं बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी. पहले मैं अपने लैश बैंड पे लगाऊंगी to give an illusion of liner. So you can see it is giving like I have applied liner, जबकि I haven't. मैंने बस lash band पे हल्का सा काजल लगाया, and I'm going to do that similarly. So just see the difference already. So yeah, now it's fine, and अब मैं इसे थोड़ा सा smudge कर लूँगी. Now it's done, and अभी मेरे को फिर भी थोड़ा सही लग रहा है काजल लगा के, अदरवाइज तो it was like disaster. Applying blush, and blush is important if you are going out. Blush gives such a healthy effect to your cheeks, to your face. So she has used a cream blush. Instead of cream blush, I am going to use this tint. We use cream blush when we need a subtle look. So tint भी वही काम करता है. I'm just taking my finger and just blending it. So guys, this is how it is looking after applying blush, and now I am quite liking my look because अब इसमें थोड़ी definition लग रही है blush और brows से. Last step is applying lipstick, and for lipstick she has used new lipstick, which is like thank God क्योंकि मुझे भी वही use करनी है. So I'm using this lip pencil. This is from Wet n Wild. I have lip lined my lips, and आप lip totally skip कर सकते हो. It's up to you, but I just like to line my lips. And now I'm going to use this lipstick. This is from Nykaa, and the shade name is Madras Kapi. I must promote this lipstick. If you know me, if you have seen my tutorials, I generally don't do like a very sharp cupid bow, but बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम वो वाला cupid bow क्यों नहीं करती, like ये वाला. So I tried this, but मुझे वही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जो एकदम थोड़ा soft curve में होता है. ये एकदम pointed heart shape में I don't like it. I don't know why. So I'm just doing my regular one. So now it's fine for me, and I am liking this look. You can see that on my face. Starting में मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मेरा फेस बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, टैन लग रहा है. And yeah, अब तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है. And अभी मैंने रिंग लाइट ऑफ करके देखी थी. So I don't know why without ring light it is looking so much better. And
रिंग लाइट के बाद तो आप लोग देख ही रहे हो, इसमें अभी हाइलाइटर नहीं है, विच आई एम मिसिंग सो मच बिकॉज आई लव टू अप्लाई हाइलाइटर, बट स्टिल you can see the glow on my cheeks without highlight. I can totally carry this look to anywhere. Like this is a very subtle look. I have just added my kajal, just extra step. बाकी मैंने सब कुछ वही करा है जो मालविका सतलानी ने किया था. If you like this video, if you like this tutorial, then please do comment down below and do tag Malvika Satlan. And yeah, I really hope you found it helpful. आप भी ज़रूर try करना and मुझे बताना आपको कैसा लगा. And yeah, I'll see you in my next video. And please channel को subscribe करना ना भूलें. So yeah.